को स्वागत किया है मेरे यूट्यूब चैनल से। और आज आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। और आप लोगों ने देखा स्टॉक मार्केट टुडे निफ्टी हिट्स फर्स्ट रिकॉर्ड हाई ऑफ 2026, सेंसेक्स क्लोज ओवर 500 पॉइंट्स अप। और आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं द निफ्टी हिट ए फ्रेश रिकॉर्ड ऑफ 2026 1343 मिनट्स बिफोर क्लोजिंग बेल। और आप लोगों ने देखा स्टॉक मार्केट टुडे निफ्टी हिट्स फर्स्ट रिकॉर्ड हाई ऑफ 2026, सेंसेक्स क्लोज ओवर 500 points. Nifty hit an all-time high benchmark gain for the third consecutive days. Nifty Realty and the Metal lead the gains in Nifty. Coil India and NTPC gain the most in Nifty. Coil India gain over 7%, top gainer of Nifty. All sectoral indices gain in trade beginning Nifty. FMCG border market indices close higher in the trade. Or SJVN and IDBI Bank gained the most in Nifty Midcap 150. SJVN and IDBI Bank gain over 10% in trade. JVM Auto and Anand Raj gained the most in Nifty Small Cap 250. Godrej Properties and Raymond gained the most in Nifty Realty. NACL and Hindustan Copper gained the most in Nifty Metal. और आप लोगों ने देखा स्टॉक मार्केट लाइव जो आईडीआई बैंक स्टॉक सेल ऑल स्टॉक क्लियर फॉर फाइनेंशियल बर्ड बीट्स। और दोस्तों आप लोगों से आज बात कर रहे हैं निफ्टी 50 का बारे में, जो स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट टुडे निफ्टी हिट्स फर्स्ट रिकॉर्ड हाई ऑफ 2026, सेंसेक्स क्लोज over 50 points up. Nifty hit an all-time high, जो benchmark gain for the third consecutive days. Nifty Realty and Metal lead the gains in Nifty. Coal India and NTPC gained the most in Nifty. Coal India gain over 7%, top gainer in Nifty. Border market indices close higher on trade. SJVN and IDBI Bank over 10% in trade. JVM Auto and Anand Raj gained the most in the Nifty Small Cap 2250. और जो मेरे चैनल है प्लीज़ थोड़ा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और लेटेस्ट वीडियो बनाने के लिए मेरे चैनल आप लोग पे जुड़ी रहिए। थैंक यू।